फूल खिलते रहे जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे सबकी निगाहों में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार, दिल देता है यही दुआ बार बार। आज के मुख्य याजक श्रद्धेय फादर वर्गीस, विकार जनरल ऑफ चांदा डायसिस, फादर विल्सन, सेंट एंटनी चर्च के पल्ली पुरोहित, फादर जॉर्ज, रेक्टर ऑफ दर्शना, फादर जोसेफ, Rector of Clinician Ashram, Father Joshi, Director of Samvad, Father Thomas Patakir, Jubilarians, Sister Saumi, Sister Aishwarya, Sister Pooja, Sister Manisha, आदरणीय सभी उपस्थित पुरोहितगण, सिस्टरगण, अतिथिगण एवं प्यारे मित्रों, आज के स्वर्ण एवं रजत जयंती मिस्सा बलिदान में आप सबका हम सहृदय स्वागत करते हैं। कोई भी सफलता एक समारोह का रूप ले लेती है। यही एक ऐसा अवसर होता है जिसे पुरानी यादों का संग्रह कर धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम संत योहन की जन्मदिन के साथ हमारी संस्था का भी 50वां जन्मदिन स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों द्वारा चांदा धर्म प्रांत में अंकित किया गया है। जी हाँ, आज से 50 वर्ष पूर्व 1971 में वर्धा जिले में संत योहन बपतिस्ता संस्था का नन्हा सा बीज भारतीय परंतु जर्मनी से प्रशिक्षण लेकर आए धर्म बहिनों, हमारे अग्रगामी बहिनों द्वारा बोया गया था, जो कि आज एक विशाल पेड़ की भांति चारों दिशाओं में अपने विस्तृत शाखाएं फैलाए बड़े ही विनम्रता से सभी को अपनी छाया प्रदान कर रहा है। भारत के विभिन्न राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं आसाम में सुचारू रूप से संचालित है। जर्मनी की ट्रियर एवं ब्राउनशेल्स, अफ्रीका की तंजानिया भी हमारे भारतीय प्रोविंस के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर हमारी 29 कम्युनिटी से एवं हम 143 सिस्टर्स जो कि ईश्वर की दागबारी में निस्वार्थ रूप से अपोस्टोलिक, एजुकेशनल, मेडिकल, प्रिजन एवं सोशल मिनिस्ट्री में अपनी सेवा दे रही है। आज इस बलिवेदी पर हम उन सभी को अर्पित करते हैं जिनके अथक परिश्रम से आज हम यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं। विशेषकर फादर वर्नर, जिन्होंने 1963 में भारतीय धर्म बहनों को जर्मनी में मार्गदर्शित कर भारतीय मिशनरी के रूप में जर्मनी एसजेबी प्रोविंस द्वारा तैयार किया। 1969 में स्वर्गीय बिशप जानवारियस ने एसजेबी सिस्टर्स का अपने धर्म प्रांत चांदा में सर्वप्रथम स्वागत कर प्रेम से अपनाया। तत्पश्चात बिशप विजयानंद, बिशप एफ्रेम एवं अन्य धर्म प्रांत के सभी बिशप्स, प्रीस्ट, जिन्होंने हमें हमारे मिशन से संबंधित सभी प्रकार के गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें स्वतंत्रता, सहायता और अनुमति दिए, जिससे आज हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के सिल्वर स्टार्स
सिस्टर साउमी, सिस्टर ऐश्वर्या, सिस्टर पूजा, सिस्टर मनीषा के लिए आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 वर्ष पूर्व संस्था की रजत जयंती के समय इन्होंने अपना प्रथम धार्मिक व्रत लिया था और स्वर्ण जयंती के समय अपनी रजत जयंती मनाते हुए अपने धार्मिक व्रत की नवीनीकरण के लिए पुनः इस देवालय में उपस्थित हुए हैं। प्रिय बहनों, हम आपको इस शुभ अवसर पर बधाई देते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा पावन पावन पावन।
आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। सती महिमारा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला कोई शांतिकारी बलिदान चढ़ा सके, निर्मल हृदय से श्रद्धा को तेरी उपासना कर सके और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन।
शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आरोग्य हो जाए, तो हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलग तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। इस सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। हे पावन महिमामय सर्वशक्तिमान और अमर ईश्वर, जो भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। First reading, a reading from the book of Isaiah, chapter 49, verses 1 to 6. Listen to me, O coastlands. Pay attention, you people from far away. The Lord called me before I was born. While I was in my mother's womb, He made me. He made my mouth like a sharp sword.
In the shadow of his hand, he hid me. He made me a polished arrow. In his quiver, he hid me away. And he said to me, "You are my servant Israel, in whom I will be glorified." But I said, "I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and vanity. Yet surely my cause is with the Lord, and my reward with my God." And now the Lord says, "Who formed me in the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel might be gathered to him. For I am honored in the sight of the Lord, and my God has become my strength." He says, "It is too late a thing that you should be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the survivors of Israel. I will give you as a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth." Word of God. Thanks be to God. हे प्रभु, हमारे यीशु हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सर्वदा आमीन। गलातियों के नवों का पुस्तक पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 तक। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, जब उपाधिकारी आवश्यक है, वह सारी संपत्ति के स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं। वह पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभाषणों और कार्यों पर भी अधीन है। इसी तरह जब तक हम आवश्यक है, जब तक संसार के तत्वों के अधीन थे, किंतु समय पूरा हो जाने पर यीशु ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुआ और संपूर्ण के अधीन थे, जिससे वह संपूर्ण के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आपका पुत्र ही थे। इसका प्रमाण है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो एक पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी की है। आप लोगों को शांति। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे
ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वर्षिया 17 से लेकर योहन बपतिस्मा का जन्म। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उसे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वो उसका नाम क्या रखना चाहता है, और उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अजंबे में पड़ गए। उसी क्षण जकरिया के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। Great joy and gratitude. Today we are in front of the altar with gratitude festival. And also naturally when gratitude comes only from a heart of happiness. So we are here, and when Sister Vidya called me and said you have to come for the Mass for the Jubilee, then I was reflecting my own experience with the SJVs, a few years of experience I have. And now I am so happy to see all our first batch members are there. Only 4 photos are there, but all our, except our Rosama, all are very healthy. They are doing a lot of work. So, beautiful introduction. In that, she was giving the history of the congregation. And also, first of all, I would like to congratulate that this Indian province is the most vibrant, active, and the whole of SJV congregation is proud of this Indian province. So for that, I congratulate you, and especially the seeds these pioneers sow that has grown such a great extent. Now you are spreading outside of India also. Houses are there in Germany, Mozambique. Some is a different region, not under. Okay. So but you are serving there. So congratulations, and especially from the part of Chanda Diocese, from the very beginning of the 73 onwards, 71 onwards, you were there, and in the interior villages of Romini, Alipur, the old hubs and all those things. I still, this is Jubilee celebration, I still hear that a little sound of that really bell in Agregami jail road in front of the provincial's room. That mat was there, and what that bells were there. You may remember when we entered into the room of Sister Vinida or Abhaya, that bell was there. Please ring that bell, that bell of joy in your heart. अनुसार हम उसके रुतबों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को
उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आगे उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीओ। और जब तुम मेरे नाम में एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति वह किया करो जो मैंने किया है। प्रभु हमारे ईश्वर हमें की बना दे कि हम निर्दोष होकर पुस्तक से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में जिंदगी में बड़े मुकाम पर पहुंचकर सबसे जरूरी है उस मुकाम पर कुछ पल रुककर पीछे मुड़कर देखना और उन लोगों को धन्यवाद देना जिनके मदद से आज आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी हाँ, समय है पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर एवं पवित्र आत्मा ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का और उन सभी के प्रति, उन सभी मान्यवरों एवं शुभ चिंतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये भावना आज हम एक धन्यवाद के नृत्य द्वारा प्रदर्शित करना चाहेंगे।
तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास करें। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। सालेब चिन्ह से अंकित हो, विभूतियों से पूजित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा। अंतिम गीत के समय आज के मुख्य याजक द्वारा मोमबत्ती को आशीषित एवं प्रज्वलित कर जुबलेरियंस को दी जाएगी, ताकि वे फिर से प्रकाशित होकर प्रभु यीशु के अग्रगामी मशाल से बनकर लोगों का पथ प्रदर्शन करें। This is a day of joy and celebration. This day was the day for which we were eagerly waiting for long, with lot of preparations. At last, we are here today. Yes, it's a reality. This day is absolutely beautiful, indeed a God. On this auspicious day, we extend a cordial and warm welcome to all to this felicitation ceremony. Before we start this felicitation ceremony, we would like to draw your attention. There is a clear sky. Behind each dark night, There is a tall tree. behind each tiny seed, An SJB congregation is existing in Indian soil because of many hands and hearts that toiled hard. on this great occasion of our Golden Jubilee. Our thoughts go back to a special personality, Sister Lourdes, who had taken the daring step to plant the seed of SJB in Chanda Mission. We commemorate her third death anniversary today. As a sign of our remembrance and gratitude, let us pay floral tribute to Sister Lourdes. May I call upon Sister Vidya, our Provincial Superior, to garland the picture of Sister Lourdes. We invite all our jubilarians, Sister Vinita representing the pioneers, and all superiors of the communities to
come forward to pay the floral tribute. A welcoming heart is the temple of God, and it is the sign of noble personalities. I would like to invite Reverend Sister Sunanda, our Vice Provincial, to deliver the welcome address. Let me welcome Sister Manisha, the Assistant General and also the Jubilarian of the day. A hearty welcome to you, Sister Manisha. Saumi wanted to be very much, I think, the most longing person to be here with us all, but could not make it. And yet I would be happy to welcome her over here. At least in spirit she will be here with us. And Sister Aishwarya and Sister Pooja. Dear Father Vincent, we are happy to have you, Father, in our midst to share our joy. And it is a joy to have you in our parish as well. We are celebrating the 50 years, and our sisters, the pioneers who had come here so long back with nothing at all, not even a house to stay on. A hearty welcome to one and all, and let us be brave enough to go forward courageously. On this great day, our candidates are here to welcome you all with thanks. Now I invite Sister Vidya, our provincial, Sister Manisha, our Assistant Mother General, and our pioneer sisters present here, Sister Vinita, Sister Karuna, Sister Preshita, Sister Sarala, Sister Prasada and Sister Priya to come on the stage to cut the cake. may I request Reverend Sister Vidya, our superior, to give a short glance on the life of Sister Manisha. सबको जय यीशु. The Silver Jubilee celebrations of Sisters Saumi, Aishwarya, Pooja and Manisha in the Golden Jubilee year is a significant
significant landmark in the history of St. John's family in India. A quarter of a century in the life of a committed religious calls for celebrations and jubilation. As I congratulate each of you jubilaries on this momentous day, I sincerely extend a note of appreciation and gratitude to all of you for your exemplary life and dedicated service in the Johannite family in India and abroad. Reverend Sister Arpita Matthew, our Superior General, has asked me to greet you and congratulate you on this day. Please accept. Today I am privileged to say a few words to felicitate Sister Manisha, the young, vibrant Assistant Superior General of our congregation. Inspired by the example of her cousin, late Sister Deepti S. Devi, she responded to the whisper of Jesus, inviting her to join the Johannite family. Since the moment she said yes to the Lord, she has been very firm in her goal and faced every challenge with courage. Hailing from a God-fearing family, Sister Manisha was blessed with prayerful parents and supportive siblings. Gifted with keen observation and high intellectual caliber, she excelled in academics in all stages of her life and was among the toppers of the schools, colleges, and universities she attended. Indeed, I consider it is an honor conferred on me as I am the lucky few to be vested with this rare and gifted opportunity to felicitate a person cool like cucumber and hot like ghost pepper is none other than Reverend Sister Aishwarya. Here I congratulate you, dear Sister Aishwarya. At this juncture, a great philosopher, Heraclitus, once said, "There is nothing constant in life except change." Today, his powerful word, I am associating with Sister Aishwarya in this 25 years of her religious life, from remotest village to the heart of the metropolitan city, a meticulous revamping by the blessings of the Lord. Thus, the time had changed. Along with the changes of the time, your religious life changed from simple to serious, better to best, ordinary to silver, and going on gold. Dear Sister Aishwarya, you are a gift to the congregation and blessing to every one of us. Sister Aishwarya, you are an epitome of simplicity, devotion, and dedication. Your phenomenal work is an illuminating footnote for generations to come. Your unassuming nature always captured everyone around. Taking glimpse of your stature, I strongly believe your immaculately modest appearance, stoic silence, neighborly talk, menace of humor, and judicious use of words are the expressions of your holiness. Act is the blossom of
thought, and joy and suffering are its fruits. In the year 1991, Sister Pooja sowed the thought in St. John's family, of which she is gathering fruits of different flavors in God's providence. Sister Pooja, you dare to dream big, dare to be different, dare to think new ideas, dare to change the world, dare to create a new story, and you dare to be you. Yes, dear Sister Pooja, you became a frontline worker, facing the challenges and starting with the new ventures. You are youthful in thinking, enthusiastic in serving, energetic in shouldering the responsibilities, jovial in nature, optimistic in facing challenges, motherly in approach, genuine in deeds, bundle of funds. Yes, indeed, you leave behind footprints of cherished memories of God's compassionate love. Service to mankind is service to God. Holding these words as motto to work with the marginalized and downtrodden, you pursued your Masters in Social Work and LLB from Nagpur University. Your name will ever be engraved in golden letters in the history of St. John's family for your renowned contribution to have a rehabilitation center for the HIV affected children, which has eventually turned to be a shelter home for the girls. Good morning, everybody. The silver star of the day, Sister Soumi George and my dear sisters. I proudly stand before you with much love and appreciation to congratulate and wish Sister Soumi George the blessings of the day on behalf of Jonite family. The Silver Jubilee celebration is indeed a landmark in the life of Sister Soumi and in the records of a congregation. For us, the SJB sisters, I believe, is a most fitting occasion to stop for a moment and to say together, thank you, dear Sister Soumi, for the unique gift you are to the congregation, and say, we love you, we appreciate you, and we care for you. Yes, Sister Soumi, you gave a challenging and dynamic response to the invitation of Jesus to follow and serve him in the spirit of John the Baptist, a call to obliterate oneself and point out Jesus to others. Sister Soumi George, after her religious formation in Wardha and Pune, rendering her service in the mission for a few years, went to Germany for her professional study in geriatric nursing. Returning to India, she served in Premdan Nagpur, the senior citizens' home, and Kopreli as the animator of the community and the dispensary. At present, she shoulders the responsibility of animating the Triya community, working in an aged home, and also discharges her duty as the secretary to the society formed for Indian province in Germany. Dear sisters, in spite of our human frailties,
all of us shine with personal features in our lives which people around us uphold. I appreciate and thank you, Sister Saumi, for your dedication and commitment in the mission of your service and presence. As a nurse, you always leave an imprint of love, care, and concern in the hearts of the sick and the aged. Your sense of responsibility and honesty in all that you do are the highlights of your committed life. Often I admire your attitude of frankness and fearlessness to stand for truth and justice, living out the spirituality of Saint John the Baptist. I am sure Sister Swami will not dare say that life has been all a bed of roses. The endurance in times of trials, pains, and concerns, your capacity to bear silently is admirable. As one writer has said so well, if God sends us on stony paths, He also provides with strong shoes. No doubt you have walked through life in strong shoes, and in this way you have reached nobility and a maturity which is something more precious than silver and gold. Today, you shine as the silver star in the galaxy of SJB congregation. I congratulate and wish you the very best and good luck in all your endeavors ahead of you. Joining and rejoicing with you today, Sister Saumi, we thank God for the magnificat of your life and pray for your continued and joyful commitment to a life of love and service to humanity. May you live out the songs and promises of your vocation, and may you turn to be ruby, gold, and platinum, being a person who care to share and dare to give, like Jesus, our Master. Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and light to everything. I am pleased to welcome all of you today to release Sister Seema's book entitled Mozambican Anubhavangal, Sister Suma's books entitled Mansion of Memories and Thoughts and Inspirations. Now it is time to release. Give this day to thank, to joy, and to gratitude. May I invite Sister Aishwarya to respond on behalf of the Jubilarians. 24 years ago, on this very day, at the prime of our youth, we have promised our Master a committed life. Today, on this 25th anniversary of that decisive moment, we realize that
what God promised us were the greatest ones. We bow before the Almighty God for His never-ending faith in us and the everlasting love that led us through all these years of our committed life. At every step of our lives, at every turn in our winding paths, He guarded and protected us to see this day and to be with you all. Today, after a meaningful liturgy and a heartwarming felicitation program, we pause for a while to look back and capture some of the events, places, faces, and persons that impacted and changed our lives for good, and those that probably had lesser impact but equally mattered in our journey over the past quarter century. We remember our vocation promoters for the painstaking efforts they made to be signposts on our way to the new family and gradually infusing into minds great perspectives, fresh enthusiasm, and brave resolutions, envisioning a brand new set of soldiers for Christ despite our candidness and freshness. We collectively thank all our formators for steering the nest and being the wind beneath our tiny wings when we were learning to fly, and for hovering low, much low, as to hold us lest we fall. We thank all our benefactors and beneficiaries who are part of our entrusted missions. In a special way, we would like to thank each of our sisters who planned well in advance to make this day truly memorable to us and did everything possible to realize that plan. Our provincial and her team, Sister Sunanda, the Superior of Provincial House, and her community, with all sisters in our committees, worked hard for days ahead of this function. Hospitality and Accommodation Committee, Food and Refreshment Committee, Liturgy and Decoration Committee, Felicitation and Reception Committee all worked in unison to create magic to mark this day indelible in our memories. We thank the choir led by Sister Sangeeta. They did a wonderful job in making the day resound heavenly. As the silver shades fade and as we walk ahead towards our golden day, we would like to pray with Cardinal Newman. Lead, kindly light, lead thou us on, keep thou our feet. We do not ask to